Okay, so welcome back, everyone. We have done till question number 15. Let's just quickly move towards question number 16 and let's see. Okay, so question number 16 is all about individuals might be in a position of power within the organization, perhaps of special expertise that they possess. So this means कि यहाँ पे individual की personal power या specialist power की बात कर रहा है. Their position of power may result in a dash for a business. अब यार बिजनेस को क्या रिस्क है? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बहुत अच्छे एक हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल जिसके ऊपर कंपनी का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है, या लेट्स सपोज एक बहुत ही क्वालिफाइड हाईली स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल जिसके ऊपर कंपनी का पूरा ऑडिट डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है, या लेट्स सपोज हमारे पास जो इस वक्त आईटी के इंडिविजुअल्स इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं एट तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी. हमारे जो आईटी के इंडिविजुअल्स हैं सर, वो भी अपनी वो स्पेशलिस्ट स्किल्स की वजह से यहाँ पे बड़े प्रोफाउंड अंदाज में जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन हर दिन जब सेठ सोता है ना, तो सेठ ये सोचता ज़रूर होगा कि यार ये जो स्पेशलिस्ट स्किल वाला बंदा है ना, अगर ये चला गया ना तो मेरा पूरा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा. अगर ये स्पेशलिस्ट स्किल वाला बंदा चला गया तो मेरा पूरा ऑडिट डिपार्टमेंट, मेरा पूरा आईटी डिपार्टमेंट, मेरा पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू कोलैप्स बिकॉज मैं हाईली डिपेंडेंट हूँ अपॉन द स्किल्स दैट यू हैव. सो यार मेरे हिसाब से क्या ये कंसल्टेशन रिस्क है? नो सर. क्या ये बैंकर रिस्क है? सर कैसे बैंकर हो सकता है? सर क्या ऑल नन ऑफ द अबव तो है नहीं. इट विल नॉट बी नन ऑफ द अबव. द आंसर इज की पर्सन रिस्क. जाहिर है वो जो इंडिविजुअल मेरे पास मौजूद है, वो जो इंडिविजुअल जिसकी 110% कैपेसिटी में वो ऑपरेट कर रहा है, दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी गिविंग मी अ की पर्सन रिस्क इन दिस रिगार्ड. सर नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से हम. हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when stakeholders are plotted on power index model. Okay, so I can call it as Mendelow's matrix model. So we have Mendelow matrix model. We have two sides of this model. Let me just quickly make this for you. The first side is level of power and level of interest. If it is level of interest, if it is high or low, sorry, the level of power and level of interest, I'll keep high, low, near to the zero, and high, low, and high. So when it is low and low, it means that the company will be including minimal efforts. When the interest is low and the power is high, we'll have to keep them satisfied. When the interest is high and the power is low, we'll have to keep them informed. And when both of them are at its peak, then these are known as the key players of the company. So yes, let's just quickly go through it. Extremely sorry. Okay, so when stakeholders are plotted on power interest matrix grid with low power, so this means that the power is low. We are talking about this matrix. The power is low and the interest is low as well, so minimal efforts. You just need to keep a very close monitoring on these type of individuals. Keep satisfied, no. Manage closely with regular engagement, no. We do not need to keep them informed. We will only be going for monitoring element, that is the minimal efforts that you can put in towards the society or towards such types of stakeholders. Okay, so the next question over here is true or false. The general public has a stake or interest in major companies because the action of the companies can affect the society as a whole. So is it true? Yes, the general public will be concerned कि भाई आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो. तुम्हें मेरी वो वाली एग्जांपल याद आती होगी कि कंपनी के बाहर एक ऐसी कंपनी है जो लेदर की मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो अपना तमाम केमिकल वाला पानी जो है वो बाहर रोड पे निकाल देती है. तो येस, द आंसर इज़ ट्रू. सोसाइटी के ऊपर जनरल पब्लिक का एक बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है. सोसाइटी के ऊपर जनरल पब्लिक का एक हाईली सेटिस्फाइबल इंटरेस्ट जनरेट किया जा रहा होता है और सोसाइटी बड़ी कंसर्न होती है कि जनरल पब्लिक जो है वो इस चीज़ को फुलफिल कर रही है या नहीं. Moving forward, okay, a question that relates to the topic of information technology.
What does MICR stands for? Pause this video, write out the answer by yourself, and then resume it by looking at my answer. So the answer to this can be magnetic instrument for character recognition. No, sir, we have already done such a instrument in our class, regular classes. Magnetic ink character recognition. This can be the answer. Master instrument for character recognition. No. Magnetic illustration for complex result, again a big no. So yes, the answer is B, that is magnetic ink character recognition. We have seen such a device in our regular classes as well. We know the characteristics of all these devices. Then moving towards question number 20, the question number 20 says, what is the function of output devices? So it seems that these are the questions that have been originated from the information technology portion. Functions of the output devices. It receives the processed data from a computer and present it in some way. Maybe this is the answer. Yes, it seems to be the answer, because output devices, there are basically three types of devices. Input device for inputting of your data, the processing, that is the CPU, for getting the data from the input devices and showcasing it to the output devices or transferring it to the output devices, and then we have the output devices, which means वो डिवाइसेस जो आपको आपका डाटा शोकेस करती है ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, वो डिवाइसेस जो आपको आपका डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लेके आती हैं. सो यहाँ पे कहता है इट रिसीव प्रोसेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इट इन सम वे. मे बी, मुझे तो यही आंसर लग रहा है, बट लेट्स मूव. It facilitates the introduction of data and information into the system. No, that's an input device. It is a device that processes data and provides result. It does not process data, but yes, it provides a result. So the half portion of this statement is correct, but the other half is wrong. So no, this is not the answer, and again this is not the answer, and obviously the answer will be part A. Moving forward, human resources plans should be and should therefore take into consideration environmental factors. So I guess I forgot to write a dash over here. It says human resource plan should be dash and should therefore take into consideration the environmental factors. So human resource plans should be simplistic. No. Why should they be simple? Futuristic, realistic, and idealistic. So see, you have to find out the best option. I'm reading it again. Human resource plan should be dash and should therefore take into consideration the environmental factors. So I may call it as human resource plan should be realistic and they should take into consideration the environmental factors. So if they are realistic plans, they will be in a better position to take a consideration of the environmental factors as well, and human are also going to have a motivation because they know that these plans are basically achievable, right? Now if I move forward on question number 22, it says the industries which provide support services to other industries are known as very self-evident. Now these are those industries that provide raw material. These are those industries that convert raw material into finished goods. Commercial industries are those industries that are earning profit. It's a generic term. And tertiary industry, again the answer is tertiary industry because these are providing support services. Support services in what regard? मतलब support services क्यों? सर देखिए, मैं जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीदने जा रहा हूँ तो वो एक ट्रक वाला मेरे गोडाउन तक पहुँचा रहा है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. वो फिनिश गुड जो मैंने बना लिया है, वो एक कंपनी, एक लॉजिस्टिक कंपनी या एक ट्रक वाला जो है वो मेरी उस गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं. तो द आंसर टू दिस इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर मींस प्रोविजन फॉर सर्विसेज, राइट? तो yes, very good. We have done with question number 22 as well. Let's just quickly move to question number 23. XYZ organization has decided to install a handmade carpet factory in underdeveloped locality.
The plan is to hire underage students as workers, paying them below minimum wage. They believe in their social responsibility to help poor student and their family. True and false. Is this statement to be a true statement? Let's look at this. If I go through the statement, XYZ organization has decided to install handheld a carpet manufacturing factory in an underdeveloped locality. Till now, the statement is very good for rational approach. They plan to hire underage student as workers. This means that they are doing something which is wrong. You cannot hire an underage student for your factory premises, because this means that you are going for child labor as workers, paying them below the minimum wage. Again, you are doing two different types of crimes. You are paying them below the minimum wage and you are hiring a child labor. So this statement obviously is not a true statement. You are not working ethically within the organization structure. Moving forward, we are moving towards question number 24. Which of the following statement is not the advantage of being socially responsible? So if I am a company that is socially responsible, which of the following is not? Again, whenever I'll see a word not, I'll either mark it in some way or I will take 1 second pause so that my mind can tune in that, okay, I'm not identifying something which is an advantage, rather than I'm identifying a disadvantage. Which of the following statement is not an advantage of being socially responsible? Being a socially responsible organization can bolster organization image and build its brand. This is something correct, but we are not trying to identify the advantages. We need to identify the disadvantage. So this is something correct, but not correct in terms of the option. Social responsibility empowers employee to leverage the corporate resources and their disposal to goods. That is also something good. You are going to have an edge if you are socially responsible in regards with the resources that you are using, but not the correct answer in regard with this question. Formal corporate social responsibility programs can contribute positively to the employee morale. Yes, if you are going to be socially responsible in terms of health and safety for the employee, अगर तुम लोग customers के लिए socially responsible हो, अगर तुम लोग suppliers के लिए socially responsible हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो एक advantage है. Again, this is not the answer because हम advantage नहीं ढूंढ रहे, हम disadvantage ढूंढ रहे हैं. Embracing social responsible policies cannot help in attracting and retaining customers. ये सही बात नहीं है. अगर तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंकरेज करते हो तो तुम कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन भी कर सकोगे, राइट? Then it says, which of the following is the best summary about the role of the finance manager? Sir, finance manager का role क्या होता है? To maximize the value of the business and its shareholder. Best नहीं है, but है. But this is not the best answer. To organize the finance department. Yes, this can be an option. I'm just for temporarily going with this option, but let's first read out all the other options. Make sure कि तुम second option को पढ़ के आंसर मत दे देना, पहले सारे options पढ़ लेना. To manage salaries and overhead of the business, वो तो finance manager का काम नहीं है ना, वो तो finance individuals, financial clerks और financial let's suppose financial planners का काम होता है, वो finance individuals का काम होता है, वो finance managers का काम नहीं है. So this is also not the answer, and this obviously is not in the answer. So the answer is part B, which means to organize the finance department. Moving forward, revenues from sales of product or services should be the primary source of funding. Yes, but the fund from sales does not come when required. Now, it's a challenging question. कहता है कि जो sales तुम करते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके फंड तुम्हें उसी वक्त मिल जाए. क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. देखें सर, दो टाइप की सेल होती हैं. एक होती है कैश सेल्स. सर, उसका फंड तो उसी वक्त मिल जाता है, उसका पैसा तो आपको उसी वक्त मिल जाता है. लेकिन एक होती है क्रेडिट सेल्स. सर, ये जो क्रेडिट सेल्स होती है ना, इसका पैसा आपको उस वक्त नहीं मिलता, इसका पैसा आपको आफ्टर सम टाइम मिलता है. तो ये स्टेटमेंट, बट फंड्स फ्रॉम सेल्स डज नॉट कम, अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अब देखो, बड़ा विजिलेंट रहना, इस स्टेटमेंट को गलत करने में तुम्हें 1 सेकंड लगेगा.
तुम इस चीज़ को गलत मार्क करके आ सकते हो। तो आंसर इज ट्रू, revenues from the sales of product or services should be the primary focus, primary source of funding, yes, but funds from the sales does not always come when it is required। ये बात भी सही है, आपको हमेशा आपके फंड्स उसी वक्त नहीं मिल रहे होते जब आपको रिक्वायर्ड होते हैं। कहता है कॉर्पोरेशंस आर ऑफन रिक्वायर्ड टू रेज एक्सटर्नल फंडिंग और कैपिटल। कहता है कॉर्पोरेशन जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग और कैपिटल के जरिए पैसा जनरेट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रीजंस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंडिंग। हर बंदा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेगा तभी एडिशनल फंडिंग लेना है यार, कम ऑन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने नजर आ रहे हैं यहाँ पे। टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना, मतलब मकसद तो है एडिशनल फंडिंग इसलिए भी चाहिए होती है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। टू स्पेंड ऑन ऑल competitive market chemistry, which competitions are no, but what we can do is, यहाँ पे सवाल में दोबारा ज़रा पढ़ लेते हैं। which of the following may be reasons for requirement, so we have got different reasons, yes। तो आप additional funding क्यों हासिल करना चाह रहे हो? आप additional funding इसलिए भी हासिल करना चाह रहे हो ताकि आप अपने business को expand कर सको। आप investment इसलिए भी करना चाह रहे हो, ये secondary है, but है additional funding इसलिए भी यूज़ होती है ताकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर सको। टू स्पेंड ऑन कम्पिटिटिव मार्केट कैंपेनिंग, येस आई वांट टू रीच आउट द मार्केट, मुझे मार्केट कैंपेनिंग करनी है। तो मेरा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तमाम मकासद के लिए आप एडिशनल कैपिटल हासिल कर सकते हो। सोर्स ऑफ फाइनेंस, यार ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया सर, इतना ईजी क्वेश्चन। येस आसान इसलिए क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है। Source of finance can also be classified on the basis of time duration, short-term source of finance, medium-term source of finance. तो मैं वो workshop वाले chart याद होंगे, long-term source of finance. So yes, this statement is true, and a very true statement. Moving forward, we are left with only 2 more questions. It's an IT question again. A dash device is a part of computer system that receives the process data from the computer and present it in some way। अगर यहाँ output लिखा होता तो साथ CPU लिखा होता। देखो इनपुट डिवाइस और डेटा डालने के लिए, ये कह रहा है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा करने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है या जो स्पेसिफिक ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, तो इनपुट तो नहीं है। अच्छा प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है, डिवाइस नहीं है। डिवाइस जो प्रोसेस करता है ना बेटा वो होता है आपका CPU। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा चीज़ें, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें समझ आ रही होंगी सर। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट एथिक्स। अगेन लास्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो अबाउट एथिक्स। एथिकली स्पीकिंग अ कार डीलर कैन सेल अ कार विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट देयर वाज एन एक्सीडेंट। इज दिस एथिकल? You can sell your car without disclosing that there was an accident as far as the car was repaired and tested by a reputed mechanic. No, you have to tell each and everything before selling your car. आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर लोगों को बतानी है ताकि वो उसी लिहाज से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस लगा सकें। So this statement is not true. It's a very false statement. You have this line over here. It represents something which is unethical. राइट, आई होप सो तुम्हें इन लास्ट 2 वीडियोज़ में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना ज़्यादा तुम लोगों को रिफॉर्म्स, जितना ज़्यादा तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चनस करवा सकता हूँ मैं करवा रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया तक आप सबकी रीच है, आप इस तबानीस के पेज से भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आई होप सो आपको इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट नज़र आया होगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम वील बी मीटिंग। Till then, take care. Allah Hafiz.